सुबह के लिए गोभी के पराठे खाएंगे सुबह। फाइनली गोभी के पराठे सुबह सुबह। हाँ हाँ, अपने एयरबीएनबी किचन में मम्मी ने बनाए हैं विद कर्ड। और व्यू देखिए आप लोग। खा के मिलता हूँ, बाय बाय। Today is day 5. Welcome to my vlog, and we are going to Kempty Falls. Had our breakfast in our Airbnb. So look at the view, man. मन करता है पहाड़ों में ही रुक जाओ यार, बट क्या करें, फैमिली के साथ आया हूँ तो अभी रुक नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई एंड स्टे लॉन्गर। ओके, बाय बाय। In and out of love, never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. Been here 1,000 times. Set up a stage of lies. Say we're done, say it's over. तो फाइनली कार पार्क कर दी है, और 40 रुपीज़ एंट्री भी टिकट थी, और फिर कार पार्किंग का अलग चार्ज है। और अब टूवर्ड्स केम्प्टी फॉल जा रहे हैं। 3-4 पॉइंट्स ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है। रोपवे से नीचे जाना पड़ता है। सो लेट्स गो। We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. मार्केट्स हैं यहाँ पे भी। पैदल जा रहे हैं, पार्किंग में लगा दी है। हम लोग ने थोड़े पीछे पार्किंग में लगा दी थी। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग आगे लगाइएगा जब भी आइएगा। यहाँ भी मार्केट है पूरी, दोनों साइड। लेट मी स्टेबलाइज द शॉट एंड शो यू। रोपवे, आप रोपवे भी यूज़ कर सकते हो। और ये दूसरा रास्ता है, यहाँ से भी। मैं तो रोपवे नहीं करूँगा क्योंकि कल रोपवे कर चुका हूँ। तो फाइनली वी रीच्ड केम्प्टी फॉल्स। इट्स अराउंड 16 kilometers from Mussoorie Mall Road. Now I'll show you some cinematics.
now I am heading back from Kempty Falls और आई थिंक धनौल्टी जा रहे हैं अब हम लोग सुगंधा। सो अगर आपको यहाँ पहाड़ों पे कोई भी कार में इशू हो जाए बाइक में तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एक्सेल मैकेनिक्स नंबर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। वुड का कुछ भी सामान लेना है तो आप इस शॉप से ले सकते हो। काफ़ी सही शॉप है। केम्प्टी फॉल से वापस जाती हूँ टाइम। अब फाइनली हम लोग का ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग धनौल्टी नहीं जा रहे क्योंकि 2 दिन पहले बर्फ़ पड़ी है। अब तक वो ब्लैक हो चुकी होगी तो कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पे 16 किलोमीटर्स ही था अपना ये केम्प्टी फॉल से। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे। काफ़ी अच्छा टेम्पल है। दलाई लामा 14 वहाँ पे रहते थे और हिस्ट्री मैं आपको वहीं जाके वहाँ की बताऊंगा। ओके, सी यू। सो फाइनली हम लोग बुद्धिज्म टेम्पल पहुंच गए हैं, बट ये लोग बता रहे हैं कि बंद है, बट स्टिल बाहर से दिखाता हूं आपको कैसा है। ये टेम्पल का नाम है शेड ऑफ चॉपलिंग टेम्पल। सो जो ये टेम्पल आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये 14th दलाई लामा जब आए थे तो उन्होंने रिफ्यूज यहीं पे किया था। उनके साथ काफ़ी तिब्बतियन फॉलोवर्स भी आए थे, तो उन्होंने यहीं पे मसूरी में ही अपना रेस्ट हाउस बना लिया था। और उसके बाद 1959 से काफ़ी इयर्स जो यहीं रहे। फिर गवर्नमेंट ने उनको आगे एक शेड टाइप दे दिया था, धर्मशाला बना दी थी। तो फिर वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तब से टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और मंदिर भी है। यही रूट है ऊपर जाने का टेम्पल में। नीचे का टेम्पल आपको मैंने अभी दिखाया, वो ऊपर बुद्धा जी का स्टैचू है।
can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your ego. बुद्धा की स्टैचू देख लिया, अब हम वो देखिए कितनी हाइट पे, वो रहा बुद्धा टेम्पल। और अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। बट यार मस्ट विजिट प्लेस, अगर आप लोग आ रहे हैं मसूरी, रियली मस्ट विजिट।